So hi everyone, I am Parampreet Singh, and while continuing our MLP series, today we will be having our session 20th, and which is on neural networks, mainly introduction to deep learning. All right, so neural networks come under deep learning, not machine learning, and this is like the week 11 stuff. So after the end of today's session, your week 11 will be mostly will be covered. All right. So just before starting the session, just one news I want to share, that I have started the membership in my YouTube channel. So you guys can join my channel by in this link, if you want to support me further, by any financial means. All right. And one person has taken the membership, so just to give a shout out, his name is Narasimham. So thanks to you, Narasimham, if you are watching this session. So uh, okay, that's it, and let's start the today's session. So let me list down all the topics first. Just before the topics, have you guys completed week 11? Like, I know assignment तो सबने कर लिया होगा. What about the like concepts and all? Have you all completed week 11? You guys can No, react or speak. no. Okay. So let me list down the topics. Um, okay. Session 28, Intro to Deep Learning. All right. Let me zoom in as well. It's okay. So we will discuss various topics. First is artificial neural networks, and then second is like activation functions and backpropagation, and some more activation functions, and during these activation functions, some more namings, things like layers, neurons, hidden layers, and etc. etc. All right. And deep neural networks. Well, these are that is the same as the artificial neural network mainly. Okay, so just like before starting the session, okay, open here the whiteboard, draw, and let me connect my pen. Okay, and how many of you know what is how many of you have heard about neural networks? Okay, किसी ने भी नहीं सुना like neural networks or artificial neural networks, something like that. All right. Let's start from very basic. ये तो सबको पता होगा. Chat GPT, everybody knows. Um, Yeah. okay. And Himanshi Archit. Okay. So Chat GPT के पीछे underlying technology. What about that? Do you guys know what is the okay, AI is behind it, artificial intelligence. What is in the AI specifically? Like, okay, LLMs. Do you guys know? Large language models. Okay. Yes. Mm-hmm. All right. Okay. Yeah. You were saying something, Chief? I said yes. Okay. Large language models. So, right. I think. Okay. No worries. So, ओके पहले थोड़े से बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं जिससे आपको जो है लेट्स बिल्ड द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग टू गेट इनटू न्यूरल नेटवर्क्स. ओके, now you will easily relate everything to the neural networks.
like, okay, this from chat GPT. So chat GPT everybody uses, whether it's like chat GPT, Claude, or Perplexity, or various other AI models, Llama and Gemini, everything, right? So these are all like large language models. Okay. And what are large language models? Large language models, like, large is defined by like large. LLM is like large language model, and the first L represents large. Large is like basically it represents if we have a very big model with a like huge data set, then we call it as a, which is trained on a huge data set, then we call that model as a large language model. Okay. So if we see these two words, language model. So in ML, like in artificial intelligence, if we consider this as the artificial intelligence, and let's say machine learning is somewhere around, okay, machine learning is somewhere around here, and then deep learning. Okay, I'm not including data science and all right. So there is a, like, in deep learning we have like in AI only, we say like we have various fields. Okay. So one is like computer vision. Okay. The other is NLP, and there are other fields as well, like for different kind of technology. Computer vision is for image processing mainly, like image generation, not image generation, image processing and other things. And NLP is natural language processing. What we write, like whatever we, okay, whenever we pass in the text to some machine learning model, okay, that that will be considered as a, like, we are doing some NLP task. And the chat GPT, the underlying technology behind language model is NLP. All right. So in NLP, अगर like if you have seen the week 11 content or week 12 content, आपने देखा होगा एक sentiment analysis करके एक topic है, right? So that sentiment analysis is same, like we have some text paragraphs, and based on these paragraphs, a model is trained, and the model has to predict whether that sentence has a positive sentiment or a negative sentiment, like whether that sentence is a positive, it is a kind of an affirmation, or like whether it is like spreading some negative thoughts or something like that. All right. So this is like the main you can say crux behind all these. Now if we like integrate all of this to what we are learning, so in the, like, in all these things, like in AI we have other things as well. In machine learning, like, you have seen various models, like if I list down the models here. So okay, yeah, you have seen a decision tree, or like if I say tree based models, okay, and linear models, and some other models like SVM, and okay, K means a clustering model. Well, those are in unsupervised learning. But yes, we have like various kinds of models and some other models as well. Okay, so these are like a different variety of models you have, like we have seen in machine learning, especially in MLP course, right? And these models, based on these models, especially on linear models, okay, just following the linear regression, which is like the first model which we have discussed in these MLP sessions and done in our MLP course as well. Linear regression, like based on these linear models, um, like we have, if we use these linear regression models on with some other things as well, then we like okay, if we have like a, okay, let me try with a different thing. Okay, so decision tree, uh
generally in a decision tree we have a like single decision tree, right? Then in a random forest or other boosting models we use various decision tree models, right? Itna to you guys know, am I right? Like in random forest we use various decision trees, right? So the thing is like here we do some kind of aggregation or um, like voting, something like that, to end up with some output. All right. Same thing we have in neural networks. Okay. And yes, one more thing. All these things, computer vision and NLP and the sound-based, like audio-based AI technology and other things. Um, everything inside deep learning is just neural networks. Okay. And to be specific, we call it as a artificial neural networks. Like because these are obviously artificial, we create them on our own. So if we like use the same understanding of this analogy, this like using multiple decision trees, combining them into one and calling them as a random forest, we use like not one linear model. Instead, we use various linear regression models, and not only like a series of linear regression model, but like we have multiple layers of these models. Okay, so this we can say as a like, if I draw a square, so we can say this is a layer 1, then some more layer, let's say 1, 2 and 3. Okay, this is another layer, and then one last layer we can see something like this. Okay, so these we can say this is a like, okay, this is not a neural network exactly. So if we combine like various layers of like, you can say them as a layers or levels also. Okay, if we use same model, or not only in fact the same model, we have variations, but the underlying model is same, the linear regression. Okay, if we use the linear regression many number of times, but like in different levels. Okay, so here you can see we have like we are using 5 models here and 3 models here and 1 here. All right, so this is like the different difference. And then we have something called a neural network. How neural network? Like whatever output is being like whatever weights are being generated by these 5 linear regression models will pass into each of the next linear regression model. All right, so these will make like various combinations. So all these will be passed into this first one, and then the next one, um like this, and then the third one like this. All right, and then the same thing happens here as well, and this will make these like combinations of models as a neural network. Okay, now you might have like various questions ki why we are combining all these models and all. The main thing is like the main, you can say, use case of doing this is to improve the accuracy of the model, or like to make our model robust. Okay, like okay, अभी इतना सबको clear है till this, the very basic intuition behind neural networks. Okay, and what about everybody else? Archit, Abir, and academic. All right. So okay. Now what we will do is okay, after this, but like the main requirement for these models is to improve the accuracy. Same way आपने decision tree में देखा होगा. Like if you train a single decision tree and do the predictions, you might get an accuracy of around, let's say, you have some data set, you have trained the model and you are getting 58% accuracy. But now if you train the same data, like if you use the same data and train the random forest, like based on multiple decision trees and with different techniques in that as well, like different kind of voting, segregation and sampling,
then you will get like a better accuracy, let's say 80% or something. Okay, and that's why like whenever someone uses a tree based models, they start with a decision tree, then they move on to random forest, and then other models like then they move on to forest based like the random forest, and then boosting models like XGBoost and gradient boosting and other kinds of models. Okay, so like it do the voting sample and aggregation, all that stuff. But here in the neural network, something like we have a different concept, like we use some different thing here. Like यहाँ पे we can see we have various linear regression models, right? And these, like we call them as a these three things we call them as a layers. Okay, layers, and each model in all these layers we call them as a neuron. Okay, so this is like neural networks are made behind the actual analogy is like it is inspired from our neurons which we have in our brain, which basically detects any activity and give some response based upon that activity. So exactly same work nahi karte, of course. Still we don't know how our neurons work, but some kind of a same analogy. So that's why we call each model as a neuron, and then a series of models in one part we call it as a layer. Okay, a layer of neurons you can say, and then we have various layers. All right, so this is like the main you can say the terms in neural networks. Now the one thing is, okay, can anybody tell me what is like this equation is for which model, like ये कौन से मॉडल की इक्वेशन है? Is f of x wx plus b, or even if I say it as a like y hat. Anybody? थोड़ा सा भी like if you have any kind of idea. MLT में we have did this in MLF we have done this. In fact मैथ्स वन में भी एक वीडियो थी जिसमें इसका थोड़ा सा हिंट था. So okay, this is the like equation of linear regression, right? Yes, linear regression. This is the equation of linear regression, wx plus b, where w are the weights which we pass in, and x is the data which we pass in, and then the b is the bias or intercept, right? Based upon the data we train our model, and we try to optimize the values of weights. We try to find the best value for weights, right? This is the like main thing behind like linear regression. Now like in these in the linear regression, this is like just one linear regression, let's say. Okay, if I follow this analogy only, not these many models, let's say मैं एक छोटा सा न्यूरल नेटवर्क बनाता हूँ, बहुत ही छोटा सा, from 2 and then 1 layer here. Okay, okay, how many layers do we have? How many layers do we have here? Two layers like Yes, layers are 2, and how many neurons do we have here? 3, right? So layer 1, layer 2, this is neuron 1, this is neuron 2, and this is neuron 3. Okay, a very basic neural network. This is also a neural network. We can't say this is not a neural network because like we have uh, various models in different levels which we call them as a layer. Okay, so let's say in both of these neurons, okay, these one and this second neuron, we are using this equation, okay, wx plus b.
Now if I use another pen, so see, okay, let me start with this one. So in this first neural network, let's say we have a data which is of shape, let's say any number of samples and just 5 features. Okay, so we are, when we pass in the data into these, so okay, दिस इज द लाइक हम जो डेटा पास करते हैं ना न्यूरल नेटवर्क में, तो वो सारी लेयर्स में पास होता है एक साथ. ओके, so that means all the samples and all the features will be passed into this first layer, and similarly for the second layer. Okay, and if we do not have like some dropout layers or some more layers also, see बहुत सारी types की layers होती हैं, मैं just आपको बहुत basic बता रहा हूँ. ठीक है, so now okay, let's take the first equation here and the second here. So Hello, I'm yes, audible. yes. Yeah, here I have a doubt. Like you have said, like if x is a there is a shape of 105, Mm-hmm. so it will applicable to all the models, like all the neurons. Yes, One, all two. the neurons in the first layer. Okay, not Okay, in this first layer only mainly. All right, I will tell you like why. ये आपको अभी पता चल जाएगा. Okay, so okay, in both of these neurons, we will have like some weight and some bias, right? Okay, let me close the telegram. Okay, so मुझे बस थोड़ी सी information दो. Like bias is a single term for both, right? Let's as I said कि पूरा data set, complete data set will be passed into both, like the complete layer, which means to all the neurons uh, it has. Okay, so now tell me like what will be the like how many values does this w contain? If I call this as a w1, like this is how sorry, w1 and w2, how many values does w1 will have? Like is, will it be 5, will it be 2, 3, 2.5, or anything? Anyone? Like how many values w1 and w2 will have? Okay, see, मैं पूरा, I'm like whenever we pass the data in a neural network, in the first layer, uh, doesn't matter how many neurons it has, the same data set will be passed into each and every neuron. Okay, so it means इस पे भी 100 rows and 5 columns जा रहे हैं, means 5 features, and इस पे भी 100 rows and 5 columns जा रहे हैं. ठीक है, so the shape of like the number of values w1 and w2 will have obviously 5, right? Not 2, it will be 5. Okay, because this like the first neuron will have this equation and the second will have this equation, so both are independent here. Okay, itna clear hai? Now just like basic thing, after this let's say we get some output as a like, we let's call it as a y as of now. Okay, I'll give some more term. So iska output we will get some predicted value, right? Some predicted value. I am calling them as like respective y1, same for the b as well, y1 y2. Now जो भी output आएगा ना, combining the output here, like if I write the output here y1 y2, then these output will be passed as as a data for this neuron for the second layer. Okay, that output will be the, like this will be the data for second layer. Okay, ये जो है पूरा का पूरा डेटा होगा. So like you will say कि okay, this will be the whole data. And now okay, data in terms like it will be the, you can say the जो rows हैं that will remain the same, क्योंकि y1 will hold all the 100 samples and y2 will similarly hold all the 100 samples. Yes, Himanshi?
अगर वो डेटा ट्रांसफॉर्म हो रहा है और सेकंड लेयर के लिए वो हम्म डेटा y1 और y2 बन के आ रहा है, हम्म तो इससे डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज होएगी। यस, वो सारी कैलकुलेशन होगी, ठीक है। बट द थिंग इज जो नंबर ऑफ सैम्पल्स हैं वो तो सेम रहेंगे, राइट। अगर हम राइट। 100 रोज यहाँ पे पास कर रहे हैं इस इक्वेशन से, हमारे पास 100 ही आउटपुट आते हैं, है ना। एक हमारे पास आउटपुट नहीं आता। सो जस्ट टू लाइक क्लियर वन थिंग, हमारे पास लाइक 100 रोज रहेंगी, बट इसमें वी कैन से कॉलम एक रहेगा इन द y1, सिमिलरली फॉर फीचर बदल y2। लेंगे, हाँ। यस, है ना। तो यू कैन ऑल्सो कॉल इट और एज अ फीचर, बट फीचर फॉर द सेकेंड लेयर। यस। second layer, I was asking that you specified that W1 and W2 are 5, so it is a number of features Yes. No, no, which no. is same Not for W1 both and I'm like I was asking, uh, how many values? Like what are the number of values just W1 and W2 levels, vector will have? classes, something to. Value अच्छा. like W1 is a vector, right? W1 will be the Hmm. vector. These are the This is the weight vector, and the length of the W1 will be the same as the number of features we have, right? Got it. Hmm. Got it. Yes. So that this is So, the five here. Yes. so if for the second layer, Mm-hmm. then the weight will be 2. Yes, weight will be two. I'm like In just this going case, into will that. be 2. Yes. Oh, sorry. Okay. So, But I just mm-hmm, wanted to ask last question mm-hmm, कि starting when we were starting with the first layer, our distribution of the data was something different, and then yes, we, for example, had a mm-hmm, linear equation. mm-hmm, Then we passed in the data to that linear equation, and it got transformed, and we got values y1 and y2. mm-hmm, right, Now they might not be this. They might not follow the same distribution we started with, right? right. So There, I know you might be like you have a lot of questions. The end goal is like to basically to get a robust model, to get a model which has a yeah, like very high accuracy and a very low error, right? And yeah, जो भी whatever predictions do we get, that basically like underlying mathematical equations होती हैं, that is like even if you हाँ, pass in a sentence, so sentence में उसको like as a like sentence को भी हम numbers में convert करते हैं like using count vectorizer और hash vectorizer, right? एंड उन नंबर्स हाँ, को लाइक पता नहीं होता कि क्या नाउन है, क्या एडजेक्टिव है, या क्या लाइक एक नॉर्मल फुल स्टॉप है, समथिंग लाइक दैट, राइट। We हाँ, assign a lot of values, like we can assign weights to each of these, like जो भी noun है उनको हम ज़्यादा weight दे सकते हैं, adjective को थोड़ा कम, and other right, types of data को हम different, right। तो ऐसे से करके we do everything। मैथमेटिक्स में equations को कुछ idea नहीं है कि क्या हमारे लिए important है। right, The thing matters is like the output which we are getting, and is it the correct output, or is it closest to the correct output or not. Okay. got it. Okay. And that we only measure via loss function, which is again a mathematical equation, right? Hmm, hmm, So hmm, वो हम आउटपुट उस लाइक वी कैन ओनली वी मेजर दैट स्टफ, एंड उससे वी टेल लाइक अगर हमारा एरर जीरो है, वी टेल दैट इट इज़ अ करेक्ट प्रिडिक्शन। अगर हमारा एरर कोई और नंबर एक्सेप्ट जीरो, देन वी कॉल दैट इट इज़ नॉट अ करेक्ट प्रिडिक्टेड वैल्यू, राइट। This hmm, we say. hmm, hmm. So same thing we will follow here. I'll show you like what And will it be is the use case. Yes. okay. And it is not necessary that we follow the same function or like linear regression model or classifier for every layer. um We can change the layers, right? See, yes, we will change the layers. मैं अभी उसी पे ही जाऊंगा after this. We will Okay, have a sorry, sorry. topic like called activation functions. एक activation function हम सबने किया ही हुआ है, sigmoid Hmm, for logistic regression. hmm, hmm, Similarly, we will have like we have a various activation functions. Okay, I'll tell you all two three functions which we mainly use. Okay. So okay, good. now after this is for the first layer, ठीक है। Now for the second layer we only have one neuron. So what I am doing is I'm simply like for the this neuron as well we will have an equation something like this, okay। But this time जो ये x है ना,
this x here. Okay, the shape of x will be 100 comma 2. Okay, so if I like convert it to a table, that will be something like this, from 1 to 100, and this is like the y1 which is predicted here, and this will have the values for y2. Okay, हेलो yes. आई हैव अ डाउट हियर लाइक यहाँ पे 200 नहीं होने चाहिए सैंपल्स लाइक No. y1 भी 100 है सैम्पल्स y वही है ना, नंबर ऑफ सैम्पल्स आर सेम, जस्ट दैट वी हैव टू न्यू आउटपुट्स. ओके, हम वो ओके सैम्पल्स को लाइक वर्टिकली ऐड ओके नहीं कर रहे, वी आर एडिंग देम हॉरिजॉन्टली. ओके, ओके या यस. नाउ ये जो है x की वैल्यू ये होगी. नाउ टेल मी लाइक व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस w वेक्टर, दिस वेट्स. if I like give it a name, let's say मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, यहाँ पे 2 लिखता हूँ, like just superscript 1. Superscript here represents the layer number. Okay, here we have a superscript 2 and a subscript 1, something like this. If I write w21, so it means like first layer and second neuron. Okay, so this is a vector, not a scalar. So what will be the length of this w vector of like second layer and first neuron? You can check the number from here, आपको like पता चल ही जाएगा. 2, right? Okay, because we are passing in a data of 100 comma 2, which means 100 samples and 2 features. That means वो 2 features में जो हमारा like वो हो जो भी हमारा ये डेटा सॉरी द नंबर ऑफ फीचर्स होंगे, सेम नंबर ऑफ वेट्स वी विल हैव हियर. एंड बायस, अगेन बायस इज अ कांस्टेंट टर्म, you can change it anytime. You can like set it, or you can use a random value, that is up to you. Okay, bias is just to like handle the noise in the data. Okay, so this is it. And इसके बाद जो भी यहाँ से आउटपुट हो रहा है वो यहाँ पास इन हो रहा है, एंड यहाँ से हमारे पास एक फाइनल आउटपुट आ रहा है. लेट्स कॉल इट एज अ y hat, simple y hat. Okay, and that will be our predicted value. Okay, that will be our sorry this y hat will be our predicted value, which we can compare with the like with this y we have in the data. Okay, 100 comma 1 obviously. This y hat will also be of the same shape, 100 comma 1, and we can compare it with this y. Okay, with this y, like y hat minus y, and we can use any function, any like error function, and that error function will result in some error, and if the error हेलो is low, we call our model is robust. yeah Yes. yeah from like I have a bit confusion and doubt here like Mm-hmm. can you please share that screen. Yes. सो यहाँ पे हम जो हमने बना रहे हैं लाइक इसमें लेयर टू है लाइक टू Mm-hmm. लेयर्स हैं और लेयर Mm-hmm. वन में हमारे पास टू मॉडल्स हैं और सेकंड में सिर्फ वन है. Mm-hmm. ये हमारे पास एक प्रॉपर न्यूरल नेटवर्क है राइट. Right. और इस न्यूरल नेटवर्क में हमने जैसे जो डेटा है जो एक्स डेटा सेट है वो हमने लेयर वन को प्रोवाइड किया, उसके Mm-hmm. उसने जो आउटपुट दी वही Mm-hmm. इनपुट है लेयर टू के लिए. Mm-hmm. Right. जो हमारे पास लेयर टू के बाद जो आउटपुट आई है हम Mm-hmm. उसको कंपेयर कर रहे हैं विद अवर वाई लाइक Right. जो हमारे पास स्टार्टिंग में था स्टार्टिंग राइट. में था. राइट. ये प्रॉपर एक पूरा न्यूरल नेटवर्क है. हाँ जी. या ओके लाइक आई हैव सम अंडरस्टैंडिंग लाइक आई वाज सम बिट कंफ्यूज्ड नाउ इट्स क्लियर. Okay, now this is clear, right? या Okay, that is good. Then अभी okay, just like बहुत सारा मेसी हो गया, बट यस एज यू गाइज आर फॉलोइंग फ्रॉम स्टार्टिंग तो आपको पूरा क्लियर होगा. नाउ दिस विल बी द एरर. अब यहाँ पे ना एक थोड़ी सी चीज़ है, जस्ट बी विद फॉर 2-3 मोर मिनट्स, आपको लाइक पूरा क्लियर हो जाएगा कि वाई डू वी यूज दिस. ओके, बेसिकली लाइक इट इज़, यू कैन से अ फैक्ट, इन फैक्ट इट इज़ अ थ्योरम एज वेल, मुझे अब लाइक एग्जैक्टली नहीं पता, बट दिस इज़ अ लीनियर इक्वेशन, राइट? w x plus b, and this wx plus b is returning this y1 here, and this wx plus b is returning
some y2 here, and these will be as like the data for the next, which is the x here, and based on this x we have another equation wx plus b. So we can call it as a, like, this is a linear combination, right? It is a linear combination of vectors first of all, and it is like a linear combinations of various linear equations. So it just a simple theorem, I'm not going to prove it. So if we use all the linear um, okay, if we use the output of various linear equations as an input for other linear equations, then जो output होगा ना, that will be the that will be the again result as the same जो हमारा like पहले आएगा, just that there will be some, you can say, some multiplier will be added, that is because of this w. But that will work as a same जो हम एक normal एक linear regression से करेंगे ना. So this neural network, it is a neural network, but इसमें एक flaw है कि we don't have any activation function. So this will be like treated as a normal linear equation only. Okay. Why? Like यहाँ पे जो ये y1 y2 है, ये हम as a data pass कर रहे हैं for the second equation, right? तो हम directly, like, why can't we just transform this original data which we have here of 100,5 into, like, we can use any algorithm, let's say PC or something like that. We can transform this data into 100,2 and उस 100,2 को मैं directly pass कर दूँ, then also we will get the same result. Okay. Like we can use if we use the same method here, so it is just मैं linear regression ही use कर रहा हूँ. It's like there is no difference if I am like using completely linear regression here. There now after that there's a concept called concept will come, that is activation functions. Okay. What activation functions do is like एक activation function तो आप सब लोगों ने देखा होगा, which is the sigmoid. Sigmoid activation function, जिसको हम as a sigma भी denote करते हैं, which is 1/1 plus e raised to the power minus z, right? And here this z is simply the output of this linear regression equation. Okay, can you guys tell me the like sigmoid activation function, like sigmoid is used in which machine learning model? Logistic regression. Yes, it is logistic regression. Okay. This is like one activation function. We have various activation functions, ReLU, okay, TanH and leaky ReLU and other activation functions as well. मैं बस अभी आपको तीन लिस्ट करके दिखा रहा हूँ. ReLU is a very basic activation function. It just take the maximum of 0 and whatever the z value we have here. Okay, and the TanH, if I like TanH formula. Yes. Okay. TanH activation function. Okay. Yes. So if I have a graph with the function, that would be much better. Okay. We can use any of these results. Let's use this one. So the TanH is a little bit different, just replace that x with the z value. Okay, so e of z, yeah, minus and plus e of z minus e raised to the power minus z upon e raised to the power z plus e raised to the power minus z. Okay, so this is the TanH activation function. All of these are using this equation as a underlying equation. Okay, अब इन सारे functions की output की range, इन सारे functions की range different होती है. So hence we will have a like one addition in the neural network, which are these activation functions जो result करते हैं हमें एक different kind of an output. Okay,
which makes our neural network an actual neural network, not a linear regression. Okay, so like for the sigmoid, range is okay, if I write range here, range is 0 to 1, right? And for the okay, yeah, for the ReLU, okay, ReLU की रेंज क्या होगी? मैं TanH की लिख देता हूँ, TanH की रेंज है -1 to 1. Okay, what will be the lower bound of ReLU? Like from the function, can you tell me? सबसे least value क्या आ सकती है? 0. 0, because we are taking the maximum value of 0 and z. अगर z negative हुआ then हमारे पास Infinity. 0 है. Yes, it is infinity, 0 to infinity. Okay, now we have like various ranges of values here. Okay, so ये various ranges of value which basically tweaks the data, and which helps us learn which helps the model learns various more features of the data. Like normally if we, अगर हम एक normal let's say linear regression ही ले लेते हैं example, if we simply train a linear regression model, let's say we have an accuracy of 80%, which is quite high. But let's say what we do is we use the polynomial features, okay, with a degree of 2, and after that polynomial features we train a linear regression model, and this way we are getting an accuracy of let's say 95%. Okay, so can you see the difference? Like this is the difference of 15 percent, right? And that difference is huge. Like if you have, let's say if the threshold is around 85%, then this model is not crossing that threshold, and but this model is crossing this threshold. Okay, so this is just done by adding some new features. Okay, not only adding, let's say we do a lot of stuff feature. Okay, मशीन लर्निंग पाइपलाइन में हमारे पास मेनली एक तो होता है इम्प्यूटेशन. ओके, डेटा क्लीनिंग विच कम्स इन डेटा क्लीनिंग. फर्स्ट इज डेटा क्लीनिंग, then feature engineering we have mainly. Okay, in feature engineering what we do, we either do these transformations by polynomial features, some transformation different as well, and some like new custom features. Like from a date we extract the year, month and date, or weekday, a weekend and something like that, or day name. And then we have feature selection, and then we have feature scaling. After that, like we have this model, right? This is our general pipeline of a machine learning model. Itna to you guys know, right? Is this is clear, right? Abhi, all these things, we do all these things like this one and this one, we do all these things manually. Like we use standard scaler, we do feature selection, we do all these things except data cleaning. That is important. Okay, but all हम यहाँ पे we have like a limited choice. Like हम polynomial features हम चाहे we even use a grid search CV to find the best parameter value, best degree of polynomial like 2, 3, 4. And similarly for the transformation and other things, for the feature selection also, number of features to select, we do various kinds of transformations. We do hyperparameter tuning, right? Instead of doing all this manually, and यहाँ पे ना हम जब भी करते हैं we tend to a limited accuracy. Like यहाँ पे we are getting the accuracy of like 95%. let's say हमने इतना कुछ किया. Okay, नॉट 95%, थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ. लेट्स से हमारे पास 90% एक्यूरेसी आ रही है. ओके, एंड वी वांट अ मॉडल which should be like very accurate. Very accurate means we call like around 98 to 99% accuracy we need. Okay, now let's say you have all these steps in your machine learning model pipeline. You have done various hyperparameter tunings, you have created various features. आप जो है maximum 90% ही achieve कर पा रहे हो. Okay, let's say you started from some 80% and you have reached maximum 90%. उसके ऊपर आपकी accuracy जा ही नहीं रही.
आपने बहुत सारे मॉडल्स बना के देख लिया, आपने बहुत सारे फीचर सिलेक्शन, फीचर स्केलिंग, बहुत कुछ कर लिया, कुछ भी आपके पास इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, then what we do is we use neural networks. Okay, in neural networks, like here, okay, yeah, here we can see like we have different layers, right? So these different layers, in each of these different layers we have various amounts of features, and उन features की help से जो न्यूरल नेटवर्क है इट ऑटोमेटिकली क्रिएट न्यू फीचर्स. ओके, सिमिलर लाइक जो हमारे पास ये था y दिस y1 and y2, these are new features, right? The like the number of samples are same but the features are new, and which we can say as a transformed data. It automatically create new features and learn those features. Okay, abhi manually we have a like we do it at like some limited extent, like हम बार बार हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करेंगे, बार बार हम लाइक पैरामीटर चेंज करेंगे ग्रिड सर्च सीवी के लिए, मैनुअली हम करते रहेंगे ऐसे, एंड हमने एक लिमिटेड अमाउंट तक ही बना सकते हैं. लेट्स से डेट जो है हमारे पास एज अ ये होती है, ठीक है, लेट्स चेक द टुडेज डेट ओनली. सो वी हैव अ डेट समथिंग लाइक दिस. हम मैनुअली इससे क्या क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? एक डेट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एक मंथ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एक ईयर, then whether it's day name, then based upon the day name whether it's a weekday or whether it's a weekend, right? हम इतना एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. एम आई राइट? दिस फीचर इंजीनियरिंग वी कैन डू, है ना, फ्रॉम अ डेट फीचर. अभी आफ्टर दिस लाइक ओके, these feature engineering, ये जो है हम like we understand the analogy as well कि why we are doing this feature engineering normal machine learning model पे. okay, बट आफ्टर दैट अब भी हमारे पास लाइक और कोई चॉइस नहीं है, हम और कुछ ऐसा नॉर्मली नहीं कर सकते. हम फिर क्या करते हैं, थोड़ी सी और फीचर इंजीनियरिंग के लिए जो भी हमारे पास डेट आई ना दिस 28, we do like we apply polynomial features into it, or we do feature scaling into the month or year. ऐसे ऐसे करके हम और भी न्यू फीचर्स बना लेते हैं, ठीक है, या हम इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं. वी हैव सम न्यू फीचर कॉल्ड xn, एंड ऐसे करके हमारे पास कुछ फीचर्स आ जाते हैं. बट ये हम सारा कुछ मैनुअली कर रहे हैं. बट जो न्यूरल नेटवर्क है इट डू एवरीथिंग ऑन इट्स ओन. ओके, ये अपने आप न्यू फीचर्स बनाता है, एंड दैट फीचर हेल्प्स द डेटा टू लर्न, लाइक हेल्प्स द मॉडल टू लर्न द डेटा वेरी वेल, विच रिजल्ट्स इन द like which basically results in a very accurate model of you can say 90 to 99% accuracy. इसका मेरे पास वेल एक खुद मैंने भी एक बेसिक बनाया था, एक मेरा फर्स्ट एमएल प्रोजेक्ट, एंड उस पे ऑल्सो आई हैव लाइक काइंड ऑफ दिस प्रूफ यू कैन से. ओके, आई विल शो यू इन अ बिट. सो ओके, इतना अभी तक क्लियर है आप सबको, आप दोनों को? एंड अर्चित, इज इट क्लियर टू यू एज वेल? ओके, नाउ see, abhi I'll show you one website, TensorFlow Playground. Okay, this is a playground. So okay, I hope you guys can see the like you guys can see the data here. Can you guys see this data, everything here in the website? एक बारी just give Yes. me confirmation. Okay, so ये data, is this data linearly separable? No. No, right? अगर हम नॉर्मल लीनियर इक्वेशन यूज करते रहेंगे तो हम करते रह जाएंगे, हमारे पास नहीं आएगा. ओके, इफ आई इवन चूज फॉर अ रिग्रेशन डेटा, एंड इफ आई लाइक increase like the batch size and other relevant stuff as well. Okay, if I increase the noise a very much bigger, okay, इतनी noise ठीक है. ओके, मैं थोड़ी सी और बढ़ाता हूँ. Yeah, that is better. Okay, now tell me, is this data linearly separable? It is for regression. Can we separate this data? Like, Mm, No. no. no, right? Okay, मैं classification का फिलहाल example लेता हूँ. That is more
you can say much better example. ठीक है. Now what does a neural network do? अभी मैं थोड़ी सी ना नॉइस कम कर देता हूँ जिससे एक बहुत ही सिंपल मॉडल हमारे पास एक आएगा. ठीक है. Now okay, मैं बैच 10 रखता हूँ. ठीक है. So we have this data as of now. एंड टेस्ट डेटा नहीं, ज़रूरत नहीं. आउटपुट इसकी भी ज़रूरत है. ओके, आउटपुट की ज़रूरत पड़ेगी अभी. तो अभी हम डेटा को इसको लीनियरली सेपरेट नहीं कर सकते. लॉजिस्टिक रिग्रेशन से भी इफ़ वी इवन ट्राई टू सेपरेट द डेटा, वी विल हैव लाइक अ थ्रेशोल्ड हेयर. लेट्स से हमारा थ्रेशोल्ड जो है समथिंग अराउंड 0.5 आता है. देन ऑल्सो वी कांट सेपरेट द डेटा. हम हाफ ऑफ द this only we can modify. Sorry, only half of the data we can predict correctly. Okay, like how if I take the screenshot from here and if I like show it here. Okay, so this is the data we have. लेट्स से मैंने लीनियर रिग्रेशन का मॉडल बना लिया. ओके, एंड वी हैव लाइक द probabilities, you know, probability it predicts, and based on that probability this is let's say on the range of 100, and उसके बेस पे we have a threshold of let's say 50. बहुत एक जनरल threshold ले रहा हूँ मैं. ओके, you guys can take any threshold. अगर 50 यहाँ पे आ रहा है राइट, तो threshold होगा यहाँ पे. Alright, which means all these samples here will be classified let's say as a blue, and all these will be classified as a orange. So how much accurate this model is? We can say this model is 50% accurate, right? It is able to classify 50% of the samples. बाकी 50% it is not, क्योंकि we are using a simple linear regression model here. अभी like logistic regression model here, which is all like with logistic regression model. Abhi like in SVM you must have learned one kernel SVM, जिसपे like if we try to like transform this data somehow into a 3D plane. Let's say मैंने ऐसे 3D plane में इस data को लिया, and we in the 3D plane we have this data something like this. Orange lines are here and all the blue lines are here. This is now we can say linearly separable data, right? We can easily create a plane here. Okay, बहुत मोटा हो गया plane. We can easily create a plane here which is a line, or in 2D we call a line as a plane, and that can easily separate the data. Okay, ये हम SVM में करते थे. But what if like not in like we even our data in other like in different dimensions also, our data is not much linearly separable. Like our data is again mixed up in this dimension as well, something like this. Okay, this we cannot again separate. हम ऐसे से करके कितनी dimensions खुद से बना लेंगे. The point is that हम खुद से कितना कुछ कर लेंगे. एक लिमिट तक ही we can do on our own. Then like the okay, if we leave the understanding, then हम थोड़ा बहुत like और ज़्यादा करके हम एक मॉडल बना सकते हैं. लेट्स से हमने थोड़े सा से कर दिया और हमने एक ऐसी एक like एक लीनियर काइंड ऑफ डायमेंशन में करके हमने एक ऐसी बना ली एक लीनियर लाइन. आई नो इट्स नॉट लीनियर, समथिंग लाइक दिस लेट्स से. ओके, but then also we will reach some certain threshold. But this data is obviously cannot classify with the normal linear regression model. Now if we try to like use a neural network, let's say मैंने दो तीन, okay, by default we have two layers, and if I show you the output, can you see this decision boundary here? This is the decision boundary, this curve line. Okay, which means सारे samples सारे blue वाले भी as a yellow हो रहे हैं, and इसका you can see like loss is very high. If we increase it, if we increase the number of layers and some number of neurons as well. Okay, okay, अभी yeah, normally okay, अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही बेटर है. Okay,
and then this, yeah. ओके अब आई डोंट नो द एग्जैक्ट लाइक मैं अभी ज़्यादा कुछ मैं नहीं कर रहा ट्विक. तो यू कैन सी हमारे पास बहुत बड़ा एक न्यूरल नेटवर्क है. We have like 4 hidden layers. The hidden layers, just ignore the word hidden, just see we have like 4 layers here. Okay, this first layer, this second layer, this third layer, this fourth layer, and after that we have like a final layer which results in this output जो यहाँ पे ग्राफ में शो हो रहा है. Okay, and we have various neurons in each layer, like 8 neurons here. Let me extend the value here. Let's say okay, 8 is the maximum, so let me decrease it here. Yeah, so let's say we have these many neurons here, and yeah, okay, all right. Okay, so yes, these many neurons and layers, all the things, ये आप लोग खुद भी कर सकते हो. Different neurons and layers के combination से try to get this desired like the classification boundary. अभी like if you see if I okay, yeah, so what this will do is basically एक एक न्यूरॉन ना एक एक फीचर को like this neuron is like learning a bit of a feature for each of from using various samples. Okay, so like हर एक एक न्यूरॉन जो है this neuron is learning something. Let's say this is learning this this is learning the data which is resulting as a like output as जो अभी right पे you guys can see अभी जो यहाँ पे था. Okay, and this is learning something like this and थोड़ा सा ऐसे different है. And यहाँ पे like this layer you can see यहाँ पे थोड़ा सा at around like 6 and -6 पे बहुत छोटा सा यहाँ पे आ रहा था ऑरेंज कलर का. राइट, सो ये सारे न्यूरॉन्स ना डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स लर्न कर रहे हैं. तो जैसे ये वाला देखो, यहाँ पे इट इज़ लर्निंग, इट इज़ हैविंग सम कर्व शेप एंड इट इज़ एबल टू डिफरेंशिएट सम. एंड देन वी हैव दीज न्यूरॉन्स एंड एक एक करके ना बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फीचर्स लर्न कर रहे हैं विच इज़ रिजल्टिंग इन अ डिसीजन बाउंड्री. भैया आई नो दिस इज़ अ वेरी बैड डिसीजन बाउंड्री. हमारे पास बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल्स भी हैं लाइक दिस मॉडल. ओके, दिस इज़ अ वेरी स्पायरल मॉडल एंड इस मॉडल को भी इट कैन लर्न वेल. अभी लाइक in a while I have not played it with much, but आप लोग जो है you guys can simply go to this website. Okay, I'm sharing the link here. आप लोग आराम से like just play with the neural network and try to create a neural network which basically classify all the data easily. Okay, it is possible of course. Okay, अभी I'm not able to show any example. अगर like if I am able to, I will give all the parameters and everything in the group. Okay, after doing it. अभी like neural network जो है it will automatically learn everything and results in a output which basically is the like results in a very good decision boundary which basically have which results in a very low training error which we can say like. All right, so अभी तो our training error is stuck. Okay, our training error is stuck somewhere around 50 only. That is fine. अभी के लिए like we are in the just clearing the basics. So आप जो है ऐसे करके बहुत tweak कर सकते हो and then you will see like at some point your neural network will learn all these parameters which basically means आप उस architecture का अगर आपके पास data कुछ ऐसे distribution में है, this is the original data. Okay, this is the data from the X, you can say original X which you have passed in the very first layer. This is the like x1 x2. Okay, which you have passed here and which is resulting in this decision boundary. So आप जो है ऐसे करके बहुत ट्वीक कर सकते हो and you will eventually get a desired neural network which is basically helping the model learn the data. Abhi one thing here is basically okay, मैं अगर थोड़ा सा और बताऊं for the images mainly, like if we have a certain image, let's say we have an image and we have
to predict whether in an image, like we have two kinds of samples. मैंने बहुत बढ़िया बड़ा बना दिया. We have two kinds of images, two kinds of samples. First one is like, let's say we have a dog here, okay, and then we have a cat here, okay. Let's say this is a cat and this here we have a dog. So हमें जो है हम एक ऐसा मशीन लर्निंग मॉडल बनाना है which basically learns to classify whether the image contains a cat or a dog, okay. So you can give labels to them like 1 or 0, and then you can transform your output accordingly after the model predictions. अभी जनरली लाइक जो भी हमारा लीनियर रिग्रेशन मॉडल होता है, हम इस पे वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड लाइक कि यहाँ पे कैसे इसको लर्न करेगा. यहाँ पे इवन इफ वी डू फीचर इंजीनियरिंग, विल यू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हम फीचर इंजीनियरिंग कहाँ क्या कर रहे हैं. ओके, हाउ मेनी ऑफ यू हैव वर्कड विद एमनिस डेटा सेट? आप दोनों में से जो आई थिंक हमारे एमएलपी में तो काफ़ी बार यूज़ किए. सो एमनिस डेटा सेट, राइट. उसमें आपने फीचर इंजीनियरिंग करी, एंड अर्चित ऑल्सो. हैव यू गाइस डन फीचर इंजीनियरिंग in that MNIST data set? No, right. And feature scaling तो well you guys have done maybe. Like आपने उसको सारे pixels को you have like transformed into 0 to 1. like हमारे पास 0 to 255 की range होती है. आप maybe we have done some kind of scaling which basically transform all the data into 0 to 1. That is fine. Scaling is different, but in feature engineering we create several new features, okay. So there is a type of neural network called convolutional neural network, CNN, okay. It is mainly used for classifying the images. This is how a CNN looks like, okay. Each box here, okay, it is a very, all right, कोई क्लियर इमेज अगर मिल जाए दैट वुड बी मच बेटर. yes, it is not a clear image. okay, no worries. So this is a normal CNN, convolution neural network. What it do is it has like various kinds of layers. जो एक आप ये plane देख पा रहे हो ना, that is one layer, and the number here is representing, like if I even go with this is a convolutional layer. So like we have various neural networks जिसमें हमारे पास various kinds of layers होती है. एक तो ये normal layer होती है जिसको हम like we call it as a dense layer also, जो अभी हमने यहाँ पे देखी. These layers, okay, these layers we call it as a dense layer, okay. We have various kinds of layers, dropout layer and other kinds of layer as well, pooling and other things. So वो सारी layers से बहुत सारे we have neurons and we have various kinds of output which basically helps us to learn each and every feature of the data. Let's say if I okay, if I zoom in this part of the image, okay, मैं इस part पे zoom in करता हूँ and we will see something like this. Let's say cat का कुछ ear है, and here we have the face of the cat, and then here we have the background which is unnecessary, right. So we have to learn like जो भी हम model बना रहे हैं, we want कि it has to identify the image correctly to identify whether it has a cat or not. And same way अगर मैं dog की यहाँ पे करता हूँ, so dog की we will have something like this. Okay, if I like create okay, all right, एक बहुत ही basic सा मैंने बनाया. So you guys can see the difference जो हमारा यहाँ पे है. all right, इसको भी थोड़ा सा करता हूँ. So yes, this is like for the cat and this is for the dog. You can see like थोड़ा सा difference है, not much, but yes, there is some difference. And that difference, like each particular in a box, this neural network tries to learn, which means जो भी हमारे यहाँ पे जितने number of neurons है ना, मान लो हमारे पास एक neural network है which is of like let's say 5 layers, okay. Each layer will learn each part of the image, means okay 5 नहीं में 6, or in fact
I should take 4 here, which is more better example. So 4 neurons है, हमने वो 4 neurons में ये image pass करी. This is one sample which basically learns each part of the data. Like the first neuron है, it is learning this part of the data, the second neuron is learning this part, the third neuron is learning this part, and the fourth neuron is learning this part. Up you guys will like think how it is learning only that much part. This is just an example, okay. It does not mean कि ये exactly इतने ही part को learn कर रहा है and ignoring the rest of the data. It means कि इस part के जो weights है ना, W values, these have some weights and these other parts have like some zero weights, around zero weights, right? So zero weights means that feature is less important. Am I right? आप लोगों ने RFE में देखा होगा, recursive feature elimination में we have to list out two best features, two most important features, or normally be by checking the coefficients we have to identify which features are important. We identify via their weight value, right? And that is similar here. Like this part has some weight value here for in this neuron. Now for this neuron, this part has some weight value and rest of them has zero values for the weight or around zeros. Similarly for this, which basically helps to learn the model. And मान लो in 4 के बाद we have two, not two, in fact हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है, let's say 9 parts, in fact 1 2 3 4 5 6 7 8 and one more 9, okay. And we have the image something like this, okay. Let me create a square image, and in this image what it will do is it will learn like very small part of each of the, like from each of these outputs. That means this neuron will focus on this part, this will focus on this part, and so on and so forth for each of the part. Can you guys see like यहाँ पे ये बहुत ही broader ways पे features को learn कर रहा था, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे features को learn कर रहा है. Then we have like some more layer, let's say वहाँ पे हमारे पास let's say 81 neurons हैं, and ऐसे करके हमारे पास बहुत सारे neurons की layers होती हैं which basically learns each and every part. And somehow like एक न्यूरॉन कोई ऐसा भी होगा जो सिर्फ इतने से पार्ट को लर्न कर रहा होगा, ओके ये वाले पार्ट को. ऑलराइट, सो दिस इज लर्निंग जस्ट दिस पार्ट विच इज बेसिकली डिटेक्टिंग कि कहाँ तक इसका ईयर है एंड कहाँ तक जो है बाकी का बैकग्राउंड है, विच मीन्स इस पार्ट में ना it is giving more importance to this area and less important to this area, okay. Yeah, it is automatically recognizing each and everything, like everything is here mathematical equations, nothing else. But the filtration which we do here, like using by pooling or dropout layer, it helps everything, and like that things helps in the neural network. And similarly, like here you can see 224 into 224 into 64, which means we have like these many neurons, okay. So this is a very big number. So these many neurons we have here, and this will learn the data, which basically results in the better predicted output. Yes, Himanshi. Though that image you showed for that convolutional neural network, so each CN that layer has a different shape. So that is like, please can you go to the image? Yes, this one or this? Huh. So there is 224 cross 224 cross 64. So that means 224 neurons. Yes, 224 neurons. Like this generally a convolutional layer has, like you can say, 3 parts. Okay, मैं बहुत depth में नहीं जा रहा, बहुत basic. Not 224 neurons, but the whatever value we get here by multiplying all these 3 numbers, that many neurons we have in this particular layer. Okay, this is one layer, conv1. Okay, so this is a very So big number of number. samples same रहेगा ना Number of samples will till remain the the end, same. Yes. till the Number end. in the end also number of samples will remain same, just that the features will tweak, okay. Features change होते Got रहेंगे, and like some portion of layer, like some neurons will give importance to some features, and similarly ऐसे करके बहुत सारे different kind of features
it will learn, which results in a like good good machine learning model, which you call as a neural network. Okay. ऑल राइट, सो इतना लाइक क्लियर है? मैंने अभी यहाँ पे बहुत ही बेसिक एग्जांपल लेके समझाया. ओके, एंड व्हाट अबाउट यू अर्चित, आपको क्लियर है? ओके, so see, this is, I have taken the example of a very basic CNN based neural network. Well, it is not an actual CNN, that is different, very different, but basic understanding इतनी है. ठीक है, आपको एक न्यूरल नेटवर्क समझ आ गया तो आप बाकी के न्यूरल नेटवर्क्स भी समझ लोगे. वी हैव वेरियस काइंड्स ऑफ लेयर्स. नाउ द थिंग इज, ओके, एक छोटी सी चीज़ रह गई. if I take, okay, let's take this one, this is very much clear. So okay, let me in fact draw another neural network, that would be much better. 1 2 3 4 5, 1 2 3 and then 1. Okay, I will give some names also here. After some time आपको like clear हो जाएगा why I am doing so. Okay, so how many layers do we have here in total? 3. 3. And how many neurons do we have total? 9. 9, right? This is the output we can say, and here we have the input and everything. अभी okay, ये सारे neurons में ना underlying equation is same, which is the linear regression equation. The difference comes is जो भी इसका output आता है ना, that output, let's say it as a A, not Y, or A because activation function here we uses. Okay, so activation function का A, this helps in recognizing कि हम ये A value को activation function में डाल रहे हैं. That's why I'm naming it as a A. And that A we pass into some activation function, which results in some output, which we call it as a Y. Okay, ये हर एक न्यूरॉन के लिए. मान लो मैंने लेयर 1 पे यूज कर ली सारे न्यूरॉन्स पे सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन, विच मीन्स इन सब का जो भी आउटपुट आएगा ना, इसका डब्ल्यू एक्स प्लस बी का आउटपुट, इसका डब्ल्यू एक्स प्लस बी का, इसका डब्ल्यू एक्स प्लस बी, इसका और इसका, इन सब के आउटपुट के ऊपर ना एक ये सिग्मोइड फंक्शन लगेगा, विच विल रिजल्ट इन आउटपुट विच रेंजेस फ्रॉम 0 to 1, and वो आउटपुट will be considered as a y. It means y1, y2, y3, y4 and y5. These 5 outputs will then pass into each of the neuron here. Okay, means ये जो जितने भी सारे 5 outputs होंगे ना, ये सारे 5 outputs इस पे जाएंगे, and similarly ये सारे outputs इस पे जाएंगे and इस पे जाएंगे. फिर इन सब पे भी एक एक्टिवेशन फंक्शन लगेगा. मान लो यहाँ पे लग गया ReLU. Okay, it will result in the range of 0 to infinity. तो यहाँ पे जो आउटपुट आया, लेट्स से y y y फॉर द रिस्पेक्टिव, एंड ये सारे आउटपुट मिलके इस लेयर, इस न्यूरॉन पे जाएंगे ऑन द थर्ड लेयर. ऑल राइट, एंड देन वी विल हैव आवर फाइनल आउटपुट विच वी कॉल एज अ y hat. ओके, मतलब सबसे पहले लीनियर रिग्रेशन तो होगा, उसका जो भी आउटपुट आएगा ना, दैट विल with the input for the activation function, and that activation function helps us to tweak the data. like कोई डेटा 0 to 1 की रेंज में होगा, कोई डेटा 0 to infinity की रेंज में होगा, कोई होगा -1 to 1 की रेंज में, which basically helps the model to create to use these new output as a different kinds of features. okay, जो वो फीचर्स को यूज़ करके ना मॉडल जो बनेगा, न्यूरल नेटवर्क जो बनेगा, इट विल लाइक हैव काइंड ऑफ यू कैन से अ समराइज्ड मॉडल, जो काफ़ी अच्छा वेल परफॉर्म करेगा कंपेयर टू अ नॉर्मल सिंगल मॉडल. ओके, सो दिस इज द कंप्लीट एनालॉजी बिहाइंड न्यूरल नेटवर्क. अभी भी एक छोटे सा पार्ट मिसिंग है. इतना क्लियर है सबको, लाइक वेयर वी आर यूजिंग एक्टिवेशन फंक्शंस? ओके, एंड अर्चित, आपको क्लियर है? Okay, now just one thing. Okay, now let me name these layers also. So let's say we have okay,
we have an input of 1000 samples and 10 features. Okay, let me create various layers. Layer 1 here, then layer 2, then let's say layer 3, थोड़ी सी बड़ी है ये. All right, then layer 4, which is let's say बहुत छोटे से layer एक बनाते हैं. Then एक final layer which is this one. Okay, एक और इससे पहले एक layer बनाता हूँ. Why? I'll tell you why. Let's say this much because enough for representing. Okay, अब मैं यहाँ पे थोड़े से न्यूरॉन्स बना देता हूँ. Let's say 5 here and let's say 3 here and some numbers here 1 2 3 4 5 6 7 8, then 2 here and 1 here. Okay, now अभी थोड़ी सी नेमिंग करते हैं. Okay, let me erase this stuff from here. This portion, this goes by yes. Blue से करता हूँ. Now this is okay, sorry, this is input layer. Okay, and this is output layer. Okay, let me write output layer. Now this layer is known as like all these layers are known as a hidden layers. Okay, like you might wonder ये मैंने क्या like थोड़ा सा नेम मैंने दिए. So हमारा जो डेटा था that is of 1000 into 10 which is our x. Okay, and x and यहाँ पे ना I'll define 10 neurons here. 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10. These 10 neurons I have passed here, which basically input layer में हमारा generally कुछ नहीं होता. We do some more tweaks in the input layer as well, but अभी के लिए let's take a simple example to clear all the notations. Okay, मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा इसका like वो भी बना देता हूँ कि how these are being passed. So एक एक करके these are being passed here, like all these features are being passed into this neuron. Okay, मैं थोड़ा it would be better अगर alright, मैं इस पूरे को ना एक ऐसा combine करके लिख रहा हूँ कर रहा हूँ, and this will be passed in this and this. Now from here also ये जो 5 की 5 layers है ना न्यूरॉन्स का जो आउटपुट है वो पास होगा इन तीनों में. And similarly for this इसका तो we can easily do. Okay, this and this and this as well. Same for these 2 layers. Okay. Okay, कुछ ऐसा हमारा न्यूरल नेटवर्क होता है. मैंने पहले वाले की नहीं बनाई. You guys can like I know you guys can easily understand this. So ये मेरा like कुछ एक न्यूरल नेटवर्क ऐसा है. I know बहुत मैसी हो गया. अभी इसके बाद for this also let's say ये सारी लेयर्स का जो भी आउटपुट है वो सारा कंबाइंड यहाँ पे जा रहा है एंड यहाँ पे भी जा रहा है, एंड इनका जो आउटपुट है वो यहाँ पे जा रहा है, विच इज़ रिजल्टिंग इन अ सिंगल आउटपुट. ओके, सो दिस इज़ अ न्यूरल नेटवर्क. ओके, अभी जो भी हम इनपुट डेटा पास करते हैं ना बाय डिफॉल्ट, दैट इनपुट डेटा हैज सम फीचर्स, राइट? And that because of that number of features, the data which we are passing, we have like we create a simple input layer जो हमें जो है डेटा को ट्रांसफॉर्म करके देता है काइंड ऑफ. ओके,
वो डेटा को ना ट्रांसफॉर्म कर देता है जो हमारे न्यूरल नेटवर्क के लिए बेटर है, लाइक ट्रांसफॉर्म इन द सेंस बस वो शेप डेटा को रीशेप करता है, ठीक है। It does not like create any use any polynomial features or something. It simply reshape the data which we can easily pass into further layers. Okay, now वो जो भी डेटा है फीचर्स उतने ही रहेंगे, सैम्पल्स उतने रहेंगे, जस्ट दैट देयर शेप विल बी अ लिटिल बिट डिफरेंट, एंड देन वो सेम डेटा यहाँ पास होगा इस न्यूरॉन में, इफ आई यूज लेयर, इस न्यूरॉन में, इस न्यूरॉन में, इसमें, 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 एंड जो भी इस न्यूरॉन पे जो एक्टिवेशन फंक्शन लगेगा वो एक्टिवेशन फंक्शन लग के जो आउटपुट आएगा, लाइक कॉल इट, लेट्स कॉल इट एज अ जेड और वाई कह लो, दैट विल बी पास्ड एज अ like as a input feature for the next layers. Okay, and then for this, then for this and this. Okay, ऐसे बहुत सारा होता है, एंड जनरली लाइक इनपुट लेयर को बहुत सारे लोग कंसिडर भी नहीं करते, वी डोंट कंसिडर इनपुट लेयर एज अ लेयर, क्योंकि कभी कभी हम डेटा ऑलरेडी रीशेप करके देते हैं। द मेन थिंग इज जो भी हमारी बाकी की लेयर्स होती है ना, एक्सेप्ट द आउटपुट लेयर, जो सबसे लास्ट वाली लेयर है जो हमें वाई हैड देगी, that is the output layer. Except that output layer, then whatever layers we have, we call them as a hidden layers. Okay, and hidden layers हर एक लेयर पे like बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, एंड वो न्यूरॉन्स का कुछ, उन न्यूरॉन्स पे कुछ एक्टिवेशन फंक्शन लगे, एंड वी हैव like output, and total layers we count it as a like हम input layer को consider नहीं करते normally. So total layers, okay, आप लोग मुझे बताओ how many total layers do we have? Five. Just yes, 5. Okay, 4 hidden plus 1 output layer. One Okay, output. output layer को हम consider करते हैं because it uses a activation function. Now first layer में we have 5 neurons, right? Second layer में we have 3, Hmm. in third layer we have 8, in fourth layer we have 2, in fifth layer we have the total number of neurons, which is 1, and the sum is 5, 3, okay, 10 and 19, yeah, sorry, yes, 19. Okay, we have 19 neurons in total, yes, है ना, and these 19 neurons we have, अभी तो ये 19 सिर्फ न्यूरॉन्स हो गए अभी। ओके, मैं थोड़ा सा, ये थोड़ा बड़ा न्यूरल नेटवर्क है, एक अगर छोटा सा न्यूरल नेटवर्क बनाऊं, जस्ट दिस, ठीक है, आई एम पासिंग इन अ डेटा ऑफ लेट्स से 100, 2, we have like 2 here and 1 here. All right, how many layers do we have? Two. And 2 layers, how many neurons do we have? Three. 3. How many weights do we have? Two. 2. Okay, Total weights. yes, total weights. आउटपुट में भी वेट होता है? I'll tell you. Okay, यहाँ पे तो for this layer we have wx plus b, right? For this layer we have wx plus b. For this layer also we have wx plus b. Then after that we implement a activation, we add an activation function. Okay, so parameters here, number of parameters जो यहाँ पे होंगे, weights होंगे, वो कितने होंगे? 2. 2, right? यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे कितने होंगे? 2. 2, एंड बोथ, ये जो इन दोनों का एक्टिवेशन फंक्शन से मान लो यहाँ पे आया y1, यहाँ पे आया y2, विच इज बेसिकली दिस y1, y2। अब इस पे कितने होंगे पैरामीटर, इसकी लेंथ क्या होगी? 1। आर यू श्योर? देखो नहीं, ना, two. यहाँ पे y1 एंड y2 कर रहा हाँ, हूँ two है, तो two 2 है. होगा, राइट? सो टोटल कितने हुए हमारे पास वेट्स? 6. 6. 6, राइट?
एंड अगर हम बायस को इंक्लूड करें, बायस इज लाइक एन एक्स्ट्रा, बायस को इंक्लूड करोगे देन वी हैव लाइक 6 + 3 9, राइट? सो Yeah. इज इट क्लियर? And for example, in layer 1, if we had three neurons, तो टोटल वेट्स हो जाते कितने? अगर हमारे एट, पास 3 होती, 8 + 3। यस यस, 8 + 3, एंड उसके साथ भी लाइक विल हैव +4 एज वेल, विच इज़ द बायस टर्म, नंबर ऑफ ठीक है। न्यूरॉन्स, क्योंकि न्यूरॉन्स 4 हो जाते हैं ओके, ना, तो 8 + 4 12 हो जाते हैं। राइट? सो बाकी तो फार्मूला कॉम्बिनेशन यू गाइस कैन मेक इजीली, उस पर नहीं जा रहा। जस्ट दैट वी हैव अ बहुत छोटा सा न्यूरल नेटवर्क, एंड इस न्यूरल नेटवर्क को हम बोलेंगे 9 पैरामीटर बेस्ड न्यूरल नेटवर्क। तो आप सोचोगे इट इज़ अ वेरी स्मॉल न्यूरल नेटवर्क, यहाँ पे हमारे पास कुछ काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे ऑब्वियसली हम लोग लाइक एज अ नॉर्मली कंप्यूट नहीं कर सकते, वी हैव लाइक बेसिक हम देख सकते हैं करके, लाइक कितने न्यूरॉन्स यहाँ पे है, नंबर ऑफ फीचर्स वी आर पासिंग इन फ्रंट, दैट रेज टू द पावर ऑफ नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, एंड देन दिस एंड हेंस हमारे पास एक आ गया। मान लो हमारे पास x आ गए, x नंबर ऑफ पैरामीटर्स, and x number of parameters which includes the bias as well. So this we can say this neural network is of x parameters. Okay, अभी यहाँ पे ये तो बहुत छोटा सा नंबर है 9, यहाँ पे x मान लो लेट से यहाँ पे 100 होगा, ठीक है? मैं बस एक 100 कह रहा हूँ, होने को कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी, आई एम नॉट कैलकुलेटिंग इट। अभी लेट सी चैट जीपीटी तो आप सब ने देखा होगा, चैट जीपीटी 3 पैरामीटर्स, ओके। सो ओपन एआई का यही फोरम ही खोल लेते हैं। हाउ मैनी पैरामीटर्स? जस्ट ओके 3.5, सो 3, ओके 3, या एक छोटी सी बात, दैट इज़ द जनरल इन्फॉर्मेशन, चैट जीपीटी 3 के बाद 3.5 एंड 4 के पैरामीटर्स उन्होंने रिवील नहीं करे, क्योंकि पैरामीटर्स बेसिकली रिप्रेजेंट्स हाउ बिग द मॉडल इज़, एंड पैरामीटर से हम ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैसे काइंड ऑफ कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं मॉडल के। एंड नाउ लाइक ओपन एआई इज मोर ऑफ अ क्लोज एआई, सो उन्होंने रिवील नहीं करे, बट 3 चैट जीपीटी 3 में लाइक हियर वी कैन सी 175 बिलियन पैरामीटर्स वी हैव, ओके, नॉट 175, 175 बिलियन। सो यू गाइस कैन इमेजिन लाइक कितना बड़ा न्यूरल नेटवर्क होगा इसका, राइट? And that is why also it is able to generate a lot of prompts, like it is able to understand the prompts and able to generate a good, you can say like एक अच्छा आंसर दे पाता है, not in terms of calculation mainly, but normally if we have to want to write some letter, a message, something like that, और स्टोरी, हमें एक डिसेंट सा आंसर मिल जाता है, that is because of these many parameters, and in fact in these parameters the architecture, okay, that architecture is like the main thing, and वो आर्किटेक्चर जो है लाइक दैट बेसिकली हेल्प्स जो भी हमारा न्यूरल नेटवर्क होता है, आर्किटेक्चर में भी ना वी हैव वेरियस न्यूरल नेटवर्क्स एंड वेरियस सम अदर लेयर्स एज वेल। सो हाउ मेनी ऑफ यू, लाइक आप दोनों को पता है ट्रांसफॉर्मर्स क्या होते हैं? ओके, किसी को भी नहीं पता? सुना है। ऑल राइट, Like transformers किस वे में, like थोड़ा सा overview. not in this understanding, AIML based। देखो जीपीटी, चैट जीपीटी में जो ये जीपीटी है ना, इट इज जनरेटिव प्रॉम्प्ट ट्रांसफॉर्मर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जीपीटी फुल फॉर्म हम देख ही लेते हैं, या Like जनरेटिव प्री जो ट्रेन हमारे, ट्रांसफॉर्मर, यस, नहीं आप कंटिन्यू करो. okay. So this is chat gpt is actually a transformer, okay? Now transformer AI diagram, if I can please type, तो ये तो बहुत एक फेमस एक ट्रांसफॉर्मर भी है, आई फॉरगॉट द नेम,
अटेंशन या एक अटेंशन नेम लाइक एक पेपर रिसर्च पेपर आया था, attention transformer it has. So these like this is a transformer, and यहाँ पे जो feed forward, ये जो add and norm, multi-head attention, these feed forward, this feed forward particular is a neural network. This is also a neural network. Okay, and then we have some more layers in with that neural network. This is like add and normalization layer, multi-head attention. This is for generating, you can say, weights. Okay, not exactly weights, वो vector embeddings होती है mainly. Okay, if you go into deep तो आपको पता चल जाएगा कि what are vector embeddings and all. And then हमारे पास बहुत सारी layers होती है, like मल्टीपल लेयर्स, मल्टीपल न्यूरल नेटवर्क्स अगर हम एक साथ कंबाइन कर ले, वी गेट अ ट्रांसफॉर्मर. दैट ट्रांसफॉर्मर इज लाइक, हमने स्टार्ट किया एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन से. वी क्रिएटेड अ न्यूरल नेटवर्क, we used various neural networks and several other layers, like here we have the attention layer, the normalization layer and other layers. We get a transformer, and that transformer is really huge. Okay, so जो 175 बिलियन पैरामीटर्स हैं वो इस ट्रांसफॉर्मर के हैं. इस ट्रांसफॉर्मर में वी लाइक, आई डोंट नो एग्जैक्टली राइट नाउ कितने न्यूरल नेटवर्क्स होंगे, कितनी और लेयर्स होंगी, क्या कुछ होगा. डैट मीन्स कितने सारे अंडरलाइंग लीनियर रिग्रेशन के इक्वेशंस चल रही होंगी. ओके, एंड लीनियर रिग्रेशन इज जस्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, है ना. W is a vector, X is a data matrix, and हम मैट्रिक्स लाइक डेटा, हम यहाँ पे वेक्टर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं. एंड उसके आगे भी लाइक मल्टीपल लेयर्स व्हेन वी हैव, तो हम वहाँ पे बहुत सारी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं. तो तब भी आप लोगों ने सुना होगा कि मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड प्लेइंग विद मैट्रिक्स एंड ऑल. तो यही है उसके पीछे की पूरी अंडरस्टैंडिंग. ओके, and that in that NLP, chat GPT and everything, we have transformers. So this is it, like not everything, like a basic overview about neural networks. So इतना क्लियर Okay. है आपको, लाइक समझ आ गया आप दोनों को? मुझे एक चीज पूछनी है, जैसे कि हमारी एक लेयर है हाँ हाँ. एंड उसमें हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शन है. हम्म तो आपने बताया वो मैथमेटिकली कंप्यूट होकर आता है हमारे पास, उसमें से जो भी रिजल्ट्स आते हैं, हम्म. जो भी डिसीजन वो लेता है एक्टिवेशन फंक्शन, हाँ तो हाँ. वो आता है. तो हम्म पिछली लेयर से कोई आउटपुट आया, हम्म. वो भी कुछ डिसीजन लेकर आया है. राइट. तो ऐसा कुछ है कि एक्टिवेशन फंक्शन एक लेयर के अंदर एक ही नोड को एक्टिव करती है तो वो आउटपुट सिलेक्ट होता है, ऐसे ही होता है? No, activation function kind of, you can say, linear regression. मान लो एक activation function is a booster. सारे linear नहीं, regression लाइक model. Okay. आई एम हाँ. आस्किंग, लाइक फॉर एग्जांपल एक डॉग की इमेज हमने पास हम्म करी आपके न्यूरल नेटवर्क से, हम्म और वो डॉग की जो डिसीजन है कि वो एक लेयर डिसाइड करी है कि अच्छा इसको कौन सा लेबल देना है, हाँ कौन सी हाँ. क्लास में डालना है, हम्म. तो वो डिसीजन वो लेयर कैसे ले रही है? वो एक्टिवेशन फंक्शन के बेस पे ले रही है. एक्टिवेशन हाँ, तो जो भी उसके अंदर मैथमेटिकली कंप्यूट होके जो आउटपुट आया है हम्म. वो उसकी वैल्यू है. राइट, वो उसकी ओके. वैल्यू है, एंड एट द एंड वी गेट सम सर्टेन वैल्यू. ठीक है. सो हम्म. लाइक नॉर्मली लीनियर रिग्रेशन तो हमारे पास सारे होते हैं. एक्टिवेशन फंक्शन इज लाइक विच एनहांसेस द लीनियर रिग्रेशंस एंड क्रिएट्स अ न्यूरल नेटवर्क. तो हम जो है जनरली लाइक हम चाहे तो एक एक न्यूरॉन, लाइक हर एक एक लेयर के एक एक न्यूरॉन को भी हम डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शन दे सकते हैं. लाइक इसको एक ReLU मिल गया, इसको सिग्मॉइड मिल गया, इसको TanH मिल गया, इसको अलग मिल गया, इसको अलग मिल गया. या ऐसे भी हम कर सकते हैं, बट जनरली व्हाट वी डू इज हम पूरी एक लेयर को ना एक सेपरेट एक्टिवेशन फंक्शन देते हैं. दैट मीन्स इसके अंदर जितने भी न्यूरॉन्स होंगे ना, सबका सेम एक्टिवेशन फंक्शन होगा. फॉर हम्म. दिस ऑल्सो अ सेपरेट दिस ऑल्सो. ऐसा नहीं कि तीनों में हमें डिस्टिंक्ट देना है या तीनों में हमें सेम देने हैं या कोई ऐसा कॉम्बिनेशन. वो इट्स अप टू अस, एंड दैट वी कैन लाइक, यू कैन से वी कैन ट्यून ऑल्सो लाइक द न्यूरल नेटवर्क कि कौन सा एक्टिवेशन हम्म. फंक्शन किस लेयर में यूज करके हमारे पास कितना बेटर रिजल्ट आ रहा है. ओके.
और लॉस पैरामीटर सब इसके अंदर ही हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करते हैं। राइट राइट राइट। अच्छा, तो ऐसा कुछ मतलब ऐसा कुछ अंडरस्टैंडिंग है क्या कि मतलब एक लेयर में अगर न्यूरॉन्स की वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो फिर वो बेटर परफॉर्म करेगा, ऐसा कुछ है स्टैंडर्ड? विल नॉट एज अ स्टैंडर्ड, जनरली यही होता है कि सी कुछ कुछ स्टैंडर्ड्स हैं एंड दैट स्टैंडर्ड क्रिएट्स डिफरेंट न्यूरल नेटवर्क्स लाइक सी एन एन में एक स्टैंडर्ड है कि कॉन्वोल्यूशनल लेयर होगी, एक पूलिंग लेयर होगी, ओके, ऐसे ऐसे करके कुछ एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेयर बनेंगे। तो हमारे पास जो है बेटर, लाइक अगर हम नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे ना कुछ भी एक्टिवेशन फंक्शंस यूज़ करके, तो उससे मान लो हम्म हमने लाइक हम कैट और डॉग की इमेज क्लासिफिकेशन कर ले, मान लो उसमें हमारे पास एक्यूरेसी आ गई 95, ठीक है। बट हम हम्म वहीं अगर एक नॉर्मल सी एन एन यूज़ करते हैं जो स्पेशली इमेजेस के लिए बना है, ठीक है, फॉर हम्म कैटेगराइजिंग लाइक फॉर क्लासिफाइंग इमेजेस, तो अगर हम एक सी एन एन करेंगे ना तो सी एन एन पे हमारे पास आसानी से 97 to 98% एक्यूरेसी आ जाएगी, क्योंकि that is specially हम्म made for that particular task. Similarly, we have RNN, recurrent neural network. Okay, RNN mainly वर्क आता है टाइम सीरीज डेटा के लिए, लाइक जैसे टाइम सीरीज डेटा, जैसे मान लो वेदर के लिए हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए वेदर इज अ टाइम सीरीज डेटा, लाइक आज का वेदर क्या है, कल का वेदर, पिछले 10 सालों का वेदर है, हम्म सो ऑन। हम्म हम्म सो उसमें वो जो है इट यूजेस द हिस्ट्री एज वेल, जो पिछले लाइक 5 सालों में कोई ट्रेंड हुआ, उन सारे इंसिडेंट्स को भी इट कंसिडर इन द आउटपुट लेयर, ओके। सो दैट्स व्हाई दिस एरो विच यू कैन सी हियर, this is the architecture for RNN, which makes it, which differentiates it from other neural networks or from custom neural networks, okay. गॉट इट। सो मैं ऐसे पूछ रही थी कि जैसे नंबर ऑफ न्यूरॉन्स स्पेसिफाई करने का Mm-hmm. पैरामीटर होता है या इट्स लाइक एन अंडरस्टैंडिंग, वो लेयर अपने आप ही No, डिसाइड कर no, no, लेती है that बेस्ड ऑन is the नंबर ऑफ? parameter, the activation function ओके। and the number of neurons and how many layers, like हर एक layer how many layers we should have, हाँ, and in each layer how many like neurons should न्यूरॉन्स we have, we have to pass in, हाँ, and हर एक layer पे which activation should we use. By default activation function is linear represents linear regression, okay. So that will become a linear combination of linear equations which results in a linear output, जो एक फेल न्यूरल नेटवर्क यू कैन से, क्योंकि उस पर कुछ हम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहे, वी आर नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन एट ऑल, ठीक है। मतलब हम बस हम्म डब्ल्यू एक्स प्लस बी कर रहे हैं एंड उसी के रिजल्ट को हम आगे पास कर रहे हैं। सो वी हैव लाइक वेरियस एक्टिवेशन फंक्शन जो अभी हमने देखे, सिग्मोइड, टैन एच, रेल्यू, लीकी रेल्यू ऑल्सो, और भी बहुत सारे होते हैं, मतलब बहुत हम्म बड़े नंबर नहीं है, बट यस वी हैव अ गुड अमाउंट ऑफ न्यूरल एक्टिवेशन फंक्शंस, एंड वो बहुत हेल्प करते हैं फॉर ट्रेन अ बेटर न्यूरल नेटवर्क। एंड एक लाइक सिंपल सी चीज़ विच यू कैन लाइक बाय चेकिंग द फॉर्मूला, कौन सा सबसे ज़्यादा टाइम लेगा टू लाइक कंप्यूट, सेकंड। सेकेंड, सबसे ज़्यादा टाइम, लाइक आई वुड से 3, दिस वन। वाई, क्योंकि यहाँ पे हम ई रेस टू दी पावर कर रहे हैं एंड हमारे पास एक बहुत हाँ, छोटा तो नंबर उसमें जैसे आता है, मैक्स निकाल रहे हैं, हाँ। इसमें तो हम बस मैक्स कर रहे हैं आई इसमें। आई थॉट रेंज के हिसाब से होगा कि नो, रेंज में ज्यादा खोजो। नो, इसमें तो बस एक ये फॉर्मूला लग रहा है, अगर z 0 से छोटा है तो जो भी आंसर है हम उसको 0 ले लेंगे, अगर z 0 से बड़ा है तो हम आंसर को z ले लेंगे। एक छोटा सा मैक्स। लॉजिक लग रहा है, राइट। एंड हम्म ये भी थोड़ा सा है, सो दिस इज वी कैन से अ वेरी फास्ट एक्टिवेशन फंक्शन, राइट, और अ वेरी एफिशिएंट एक्टिवेशन फंक्शन, क्योंकि ये बहुत जल्दी कंप्यूटेशन करता है, ठीक है। सो जनरली हम्म पीपल यूजेस रेल्यू द मोस्ट, क्योंकि वो इट इज़ कंप्यूटेशनली वेरी एफिशिएंट, ओके। बाकी यूज हम्म। केस पे डिपेंड करता है, एंड वी हैव अ सॉफ्ट मैक्स एज वेल। मैं सॉफ्ट मैक्स बताना भूल गया, सॉफ्ट मैक्स आप लोगों ने उस पर देखा होगा, इन द एम एल पी लेक्चर्स ऑल्सो उन्होंने डिस्कस किया था। सॉफ्ट मैक्स क्या होता है, लेट्स से
जो हमारा सिग्मॉइड है ना, सिग्मॉइड इज फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन वेदर इट्स 0 और 1. Softmax Mm. also results the range as in 0 और 1. बट सॉफ्टमैक्स क्या करता है, लेट्स से हमें 4-5 चीज़ें क्लासीफाई करनी है. ओके, 0 1 2 3, हमारे पास 5 चीज़ें हैं. ओके, वी हैव लाइक 5 डिफरेंट लेबल 0 to 4. तो सॉफ्टमैक्स क्या करता है, हर एक की ना एक एक प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्ट करता है. सिमिलरली टू सिग्मॉइड, सिग्मॉइड Mm. 2 की प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्ट करता है. जिसकी ज़्यादा होगी, मान लो 0 की ज़्यादा है तो 0 विल बी द आंसर, 1 की ज़्यादा तो 1 विल बी द आंसर. सिमिलरली सॉफ्टमैक्स में भी, सॉफ्टमैक्स सिग्मॉइड का ही यू कैन से एक एनहांस्ड वर्जन है, which is basically e raised to the power z of, okay, e raised to the power, okay, I think z, okay, I'll check softmax formula. Yes, e raised to the power z. So e raised to the power z, and z of like I we can say I is basically उस पर्टिकुलर लेबल के लिए, लाइक एंड हम ना हर एक लेबल की एक प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्ट करता है सॉफ्टमैक्स. ओके, सो ओके, नॉर्मली सिग्मॉइड जो है एक प्रोबेबिलिटी देता है, लेट्स से 0.5 और समथिंग, एंड हम उस प्रोबेबिलिटी पे एक थ्रेशोल्ड लगाते हैं. जैसे ओके, मान लो प्रोबेबिलिटी आई 0.7, थ्रेशोल्ड हमारा 0.5 है. अगर प्रोबेबिलिटी हमारी इससे 0.5 से ज़्यादा आ रही है तो हम 1 कह देंगे, इससे कम आ रही है तो हम 0 कह देंगे. बट सॉफ्टमैक्स पे सबकी एक एक प्रोबेबिलिटी आती है, एंड नो Mm. वरीज. एंड जो भी, जिस भी क्लास की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है जिस पर्टिकुलर इंडेक्स पे, like it is from I raised to the power 1 to k is the number of labels, and it basically sum all the uh, probabilities. Okay, Mm. like यहाँ पे सम होता है, सॉरी, e raised to the power z, ऊपर में e raised to the power z आई, तो ये एक 0 to 1 के बीच में आंसर रिजल्ट करता है. ये मतलब ये प्रोबेबिलिटी देता है, एंड जब हम इन सारी प्रोबेबिलिटीज को सम करेंगे, ऑफ कोर्स वी विल गेट द रिजल्ट एज 1, क्योंकि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज शुड बी 1. सो यस, Mm. ये सॉफ्टमैक्स है. हम सॉफ्टमैक्स यूज़ करते हैं व्हेन वी हैव टू डू मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन. तो जब हम वो करते हैं ना मल्टीमोनियल इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन, दैट इज हाँ, ये बेसिकली, मुझे पता नहीं था क्या. okay, that is basically using softmax. Okay, or you अच्छा. can say using sigmoid, but for each class, like वहाँ पे हमने देखा था ना OVR 1 वर्सेस रेस्ट, 1 वर्सेस 1. हाँ. सो दैट इज इट. अगर 1 वर्सेस रेस्ट है, 1 वर्सेस रेस्ट मीन्स जैसे यहाँ पे 5 सैम्पल्स है तो 0 को ऐसा 1 ले रहा है, बाकी 5 की एक क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी ले रहा है. ओके, बट Mm. सॉफ्टमैक्स इट हैंडल्स ऑल दीज अप्रोचेस, एंड ये खुद से ही हर एक की एक प्रोबेबिलिटी देता है. ओके, सो Mm. ये एक लाइक थोड़ा सा था एक और एक्टिवेशन फंक्शन, एंड हम इनमें से लाइक कोई भी एक्टिवेशन फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन आवर यूज केस. बाकी Mm. लेयर्स हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई. um, अब बाकी लाइक यू कैन गो थ्रू दिस वेबसाइट, एंड ऑल्सो एक वेबसाइट और है. ओके, आई हैव दिस बुक मार्क्ड हियर, मे बी I recently, like I have found that website, yeah, Transformer Explain. So this you can see, बहुत उससे तो काफ़ी बड़ा Mm. है यहाँ पे, like architecture which we have here. And यहाँ पे ना it is like it is a GPT. Okay, so it is using like it is basically using the same examples which is being used in GPT-2, which was used in GPT-2. and उन सारे examples के base पे like it is predicting the next word. तो यहाँ पे probability predict कर रहा है, like इसकी probability इतनी होगी, and logits also, so that predict proba which we have function, वो हमें logits देता है. मतलब logits like, okay, there is one more concept called back propagation. छोटा सा concept है, ज़्यादा नहीं. Like generally तो in the wx plus b, sorry, f of x wx plus b, हम इस पे gradient descent अप्लाई करते हैं, right? We apply gradient descent on w and b, and we find optimal values for w and b. Am I right? Like
फॉर अ लीनियर रिग्रेशन वी डू दिस. अभी फॉर लेट्स से हमारे पास एक 2 लेयर का न्यूरल नेटवर्क है, this and this, and we are kind of let's say doing some हम जैसे जब वहाँ पे y पास करते हैं ना, so like model dot fit x comma y, so it tries to minimize the error from y and whatever y hat we have here. तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अगर बनाऊँ this and then जो भी y और y hat का जो डिफरेंस होता है, it has to minimize that difference. okay, for that minimization okay, यहाँ पे हमारा एक wx plus b है, यहाँ पे एक wx plus b है, और यहाँ पे एक wx plus b है. मैं बहुत ही रो फॉर्मेट में एक बैक प्रोपोगेशन को समझा रहा हूँ. आई एम नॉट टेकिंग द एक्चुअल डेरिवेटिव्स एंड ऑल. ग्रेडियंट डिसेंट में वी टेक द डेरिवेटिव्स. ओके, इन लीनियर रिग्रेशन आपने देखा होगा. सो बैक प्रोपोगेशन में भी हमें जो है ये w की ऑप्टिमल वैल्यू चाहिए होती है. अगर इस w की ऑप्टिमल वैल्यू मिल गई, दिस w, दैट मीन्स हमारे पास एक बेटर y आ जाएगा, विच इज बेसिकली वी हैव मिनिमाइज द एरर. and for this w value is depend upon whatever input we have, and that input is basically the output of these two neurons, which is basically ये यहाँ पे w पैरामीटर्स है, तो हमें इसकी भी ऑप्टिमल वैल्यू लेनी पड़ती है. सो हेयर कम्स द कंसेप्ट कॉल्ड बैक प्रोपोगेशन. हमें इसका डेरिवेटिव निकाल के लाइक लर्निंग रेट यूज़ करना होता है यहाँ पे भी, एंड इसका डेरिवेटिव जो भी आता है हमें लाइक वी कैलकुलेट द ग्रेडियंट फॉर ईच वैल्यू ऑफ w, एंड हम उसको एक्चुअल वैल्यू से माइनस करते हैं. द सेम ग्रेडियंट डिसेंट अप्रोच, एंड देन हम उसको यहाँ से लाइक सब या इस वाले ग्रेडियंट को निकालने के लिए हमें पहले इस वाले ग्रेडियंट को निकालना पड़ता है. सेम फॉर लाइक अगर हमारे पास और भी लेयर्स है तो हमें उन सब के लिए भी उन सब का ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा. फिर इसका जब आ जाएगा ग्रेडियंट, देन उस ग्रेडियंट के बेस पे जो इसका आंसर आएगा ना, वो आंसर को हम लेंगे फॉर दिस, देन हम इसका ग्रेडियंट निकालेंगे. सो मैंने बहुत ही फास्ट पेस में बहुत जल्दी से समझाया बैक प्रोपोगेशन. एक्चुअल में डेरिवेटिव सेट कंप्यूट लाइक इट गोज इनटू द वेरी डीप. अगर हमें जैसे ये है न्यूरल नेटवर्क, अगर हमें इसको मिनिमाइज करना है एरर को, तो हमें पूरे यहाँ तक कंप्यूटेशन करनी पड़ती है. जो ग्रेडियंट डिसेंट होता है सिर्फ यहाँ अप्लाई नहीं होता, ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाइज इन दिस 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 एंड दिस and multiple times. So that is also why neural network takes time to learn. Like normal linear regression model 1 सेकंड में हो जाएगा, न्यूरल नेटवर्क will take around 2 to 3 seconds अगर बहुत ही छोटा सा है. अगर बहुत बड़ा then it may take days as well, and that's where like GPUs and TPUs come into place. Okay, ये बहुत बेसिक सा हो गया बैक प्रोपोगेशन का. And for the like mainly back propagation, what you can do is okay, back propagation. If I like go into YouTube and there back propagation and 3 blue 1 brown, so you can see this video for the back propagation, this first video for like from the series, this series neural network series. तो यहाँ पे you will get to know what is the back propagation, how gradient descent works and all the things, and it also has like included the attention in transformers and other things. So you can refer to this playlist. मैंने भी यहीं से सीखा and this is like very much interesting. इन्होंने तो पूरी visualizations यूज़ करी हैं, so this is very interesting to learn. And then yes, also like for the transformers, this is one like a transformer like playground for transformer. यहाँ पे we can have like various things. हम देख सकते हैं कि कैसे एक एक जो है एक एक न्यूरॉन यू कैन से यहाँ पे काम कर रहा है, एक एक लेयर कैसे काम कर रही है, एक अटेंशन लेयर एंड ऑल. बाकी यू कैन लाइक सर्च ऑन इंटरनेट फॉर
what is attention and attention embedding and other things आपको clear हो जाएगा. This also I would like I'm sharing it here. These are like और भी बहुत सारे useful links हैं अभी whatever I remember now I'm sharing all these. बाकी if I find any more I'll share in the video description and the group. Okay. अभी तक जितना like हमने किया is it clear to you? Like is it clear? यस, Okay. कोई doubt फिलहाल? बाकी आपने जो चीजें भेजी हैं वो सब देख लेंगे. All right. Okay. So अभी तो that is most of it. बाकी for the code अभी time भी काफ़ी हो गया and I have like some other meet as well. So for the code well I thought कि हम थोड़ा TensorFlow भी आज देखेंगे. Like you can simply explore the week 11. Okay, week 11 में जो MLP classifier they have used, MLP classifier, MLP regressor, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल भी दिखाऊं तो एग्जांपल तो होगा तो kaggle.com iitm-GA तो okay 11b yeah this MLP regressor. Okay, can you see this MLP regressor here? MLP regressor ये basically it is a you can say a neural network and इस neural network पे like by MLP regressor it is defined in scikit-learn. In TensorFlow we have like very different and that is you can say the actual like all the namings and all अगर and neural networks comes under deep learning. तो अगर आपको deep learning करनी है either use TensorFlow or PyTorch, not scikit-learn. Scikit-learn is for data processing like all the pipeline stuff and basic models. Machine learning, scikit-learn is for machine learning, TensorFlow and PyTorch is for deep learning. So this is a neural network and this neural network में ना we are passing a tuple. That tuple represents the number of layers. Okay, and in each layer we are the number of neurons which we have. So it means हर एक layer पे we have 50 neurons. Okay. So that means we have total 3 layers and a total of 150 neurons and unke weights if you were able to like you have to calculate by multiplying all the inputs and the weights plus wires. So आपको parameters मिल जाएंगे. And this TOL it is the learning rate. Alpha it is extra. This is for the regularization. Solver ADAM like gradient descent जो हमारे पास एक approach है ना we have various like gradient descents एक है ADAM and ADAM like these are the optimization function इनके ऊपर तो like बहुत ही detail हो सकता है. We have ADAM optimizer and AdaGrad also बहुत 3-4 optimization optimizers हैं. ADAM is you can say the fastest one. Okay, gradient descent is very slower. ADAM is the very fastest. It uses like other things as well like moment the concepts of physics it applies like let's say momentum and all like जैसे हम gradient descent में we have something like this as a loss function. अगर हम यहाँ पे हैं हमें यहाँ जाना है ठीक है तो हम एक एक स्टेप लेते हैं. But what ADAM do is it uses the concepts of momentum and some other parameters also. जिससे it goes very fast. Like अगर gradient descent कर रहा है 100 iterations तो for certain output ADAM can do it in like let's say 5 to 10. लर्निंग रेट भी इफेक्ट होगा. Yes, learning rate and like in ADAM we have some more parameters. Learning rate and some other things as well like the momentum. Iterations. How much momentum. Iterations is different. Okay. नहीं उसमें मतलब चेंजेस होंगे उसमें. Yes, iterations में changes आएंगे like अगर ADAM जो है जैसे मान लो it is taking 100 iterations. So ADAM 510 में ही कर रहा है अगर हम 100 भी पास कर देंगे then also it will stay there. Okay, it won't like any kind of Yeah, it will converge basically. The model will converge. Okay, so this is like a simple you can see here hidden layer sizes is the parameter MLP regressor. तो हर एक layer का size is basically the neurons we have.
and then we can pass other things as well. बाकी TensorFlow की फिलहाल मेरे पास कोड नहीं है, बट वन कोड आई हैव from 302 heart disease predictor. So this is like my first machine learning project. What I have done here is like I have created a heart disease predictor. I started with a basic logistic regression. मैंने logistic regression से जब start किया था, अगर if I have the yes, so जब मैंने logistic regression से किया था, I was getting the accuracy of 80%. That is the maximum accuracy which I got. Okay, and इस data पे भी everybody has like done, people has done research and उनको भी 80% accuracy मिली. Then this on the same data set, then what I did is I created a neural network. Okay, यहाँ पे I have specified model made using neural networks, and accuracy it is having 98%. So you can see the difference, 18% से भी ज़्यादा का difference है. So I'm using a neural network of 3 layers. First hidden layer is of like 18 neurons, इसमें ReLU है. Then the second hidden layer 9 neurons, and then the last one is the linear. उसके बाद we have a concept of like logits. तो logits के बाद basically logits helps us to calculate the probability better. So थोड़ा सा डीप हो जाएगा. आप थोड़ा like if you just search on a Google what are logits used for, आपको clear हो जाएगा. And that is like I did here binary cross entropy. ये तो आपको पता होगा cross entropy function. And then the from logits like here I'm using sigmoid at the in the output layer. Okay, tf.nn.sigmoid, and in the sigmoid I'm getting whatever the predictions I'm doing. I'm like showing it like transforming the output, and I'm showing like whether yes or no. So ये मैंने एक बहुत basic बनाया था, and I have everything like here in model.ip.nb, this file. This is like okay. All right, so this is the basic in EDA or IPY. Yes, this one. So in this file I have like everything. I started with a normal, and then I simply splitted the features and used okay, I have also like did the scaling, and then I did like I have created various neural networks. So here you can see like we have total 4 layers. Okay, and यहाँ पे dense layer use कर रहे हैं. जैसे convolutional में normal neural networks में we use dense layer, and in this layer we have like 162 parameters. In the second we have 684 and then 333. So इसके total parameters हो गए 1189. तो ऐसे करके ना मैंने 2-3 neural networks I did, and I have did the like cross validation and all, and like here we have 4500 parameters something. Then मैंने cross validation करके whatever has the highest accuracy मैंने उसको use किया, or the best accuracy in validation and test, and that I did here. So techniques कुछ तो same रहेंगी of course, but जो feature engineering है, feature creating features and feature selection, everything can be done by the like everything will be done by the neural network. So this is like the crux mainly, not the crux, काफी deep भी हो गया वैसे. So this is like all about neural networks. बाकी you can like use examples and do everything. अब do you have any doubt? No, Parampreet, thank you. Okay, welcome. Well, आज लाइक कोड तो नहीं किया हमने, बट यस आई होप आपको न्यूरल नेटवर्क्स कंप्लीटली लाइक समझ आ गए होंगे, एवरी अंडरस्टैंडिंग हाँ हाँ हाँ. ऑल द थिंग्स. अभी जैसे आप अपना पेपर शेयर कर रहे थे, तो मेरा भी, मैंने अपनी मास्टर्स की थीसिस में भी स्किन कैंसर क्लासिफिकेशन का किया था, तो आई हैड सम रफ आइडिया. ओके, दैट इज ग्रेट देन. तो हाँ, तो um मेरा वो रिवीजन भी हो गया वो. okay, so yes, this is all about neural network, and week 11 में मेन तो यही है. We have like some more
also I think k means clustering वो छोटा सा है वो फटाफट we can do in revision session also. So अब next so on Friday I will take the revision session, उसमें we will do the PYQs and जो एक दो छोटे छोटे topics रह गए वो भी PYQs के साथ cover कर लूँगा. So let's meet on Friday then. Okay. And that's it Thank like you. for the today's session. And thank you for staying till now, like for Okay. listening everything. And